not Danish. Danish is in English intellect. And this was for poor children, orphans, who were very talented, but had no means to have access to education. They would have otherwise lost in the dust of their villages. I built them beautiful schools with dormitories, with smart boards, with quality teachers, books, bags, everything. And today, they're engineers, doctors, and so on and so forth. Then vocational training, skill training, with the British DFID and Punjab's partnership, we started skill, and this was not about brick and mortar, no. It was about investing in the students, in the future, paying to the companies, for example, hoteliering company. We would pay them per student, and they would provide them the training. We didn't build buildings or brought machines, no corruption, no nothing. So this was, I think, a game changer. But 25 million children today, even today out of schools, is a big challenge. Now, who's the culprit and where's the problem? SDGs, as you know, the gap runs into trillions of dollars. And countries, developing countries like Pakistan, can have to struggle to raise finances. Why? In 2022, we had the worst flooding in our history out of climate change. And for no fault of ours, none whatsoever, we do not even contribute even a fraction of a percent in terms of emissions. Those who play with trillions and are responsible for these emissions, they have to share their responsibility and come to the help of these developing societies. It's very important. Otherwise, this unbalanced, unjust, unfair system will lead to nowhere. Two, and importantly, we faced terrorism after 9/11. It was pushed into our borders. 80,000 Pakistanis were martyred. And boys and girls, mothers, shopkeepers, doctors, engineers, soldiers, to fight this menace. And finally, we were able to beat them hands down. But in the process, we lost $150 billion as our economic loss. During these floods in 22, $30 billion. And yet, we are asked to borrow money, to pay borrowed money and loans. Is this the way? This vicious circle of debt trap, I call it death trap, will not help at all the developing societies. So we have to strike a fair deal. Thank you very much. President Arevalo of Guatemala, in your national cooperation program, one of the things that you're trying to... वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ न्यूयॉर्क में मुबाहिसे में शरीक हैं, जहां उन्होंने अपनी गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान ने 2022 में बदतरीन सैलाब का मुकाबला किया। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ भी हम मुसलसल नबज़ आज़मा हैं। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में 80,000 पाकिस्तानियों ने जानों का नज़राना पेश किया। पाकिस्तान को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की वजह से $150 अरब का नुकसान हुआ। मौसमियाती तब्दीली के नतीजे में आने वाले सैलाब से $30 अरब का नुकसान हुआ। उन्होंने इस सेशन में गुफ्तगू करते हुए, जब वो पंजाब के वज़ीर आला थे और वहाँ दानिश स्कूल का जो इनिशिएटिव था उससे मुताल्लिक़ भी बात की और बताया कि किस तरह से दानिश स्कूल से पढ़ने वाले जो लाखों बच्चे हैं वो आज कामयाब इंजीनियर, प्रोफेसर और डॉक्टर्स की सूरत मुल्क व कौम की खिदमत कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मालदीव के सदर से मुलाकात अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली सेशन के मौके पर हुई। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और मालदीव के दरीना और गहरे ताल्लुकात के फ़रोग़ पर जोर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुख्तलिफ़ शोबों में ताउन बढ़ाने के आज़म का अदा किया। मुलाकात में तिजारत, सयाहत, तालीम, सरमायाकारी पर बात हुई। मौसमियाती तब्दीली में ताउन बढ़ाने का आज़म किया गया।
دونوں رہنماؤں نے خطے کے امن، خوشحالی اور استحکام کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا۔ اسرائیل فلسطین کے بعد لبنان کو بھی تباہ کرنے پر تل گیا۔ بیروت کی 6 منزلہ عمارت پر تازہ حملے میں 6 شہری شہید، 15 زخمی ہوئے۔ 2 دن میں لبنان کے 37 شہروں پر 1600 سے زائد حملے کیے گئے۔ حزب اللہ کے درجنوں ٹھکانوں پر بم برسائے گئے۔ خوفناک بمباری سے شہداء کی تعداد 564 ہو گئی، 1800 سے زائد زخمی ہیں۔ شہید ہونے والوں میں 50 بچے اور 98 خواتین شامل ہیں۔ صہیونی فوج کی بمباری سے طبی اور ریسکیو عملہ بھی محفوظ نہیں۔ متاثرہ علاقوں سے بڑی تعداد میں شہریوں کی نقل مکانی، بے گھر لوگوں کے لیے نواسی پناہ گاہیں بنائی گئی ہیں۔ حزب اللہ کے بھی اسرائیل پر جوابی وار جاری ہیں۔ ساحلی شہر حیفا پر 200 راکٹ فائر کیے، کئی گھر